teachers, and everyone of the MCM fraternity. I know this is a time of a mixed pleasure time. One time it is filled with happiness, and on the other time it is filled with sad also. The happiness is that you may feel that yeah, we are coming out from a big cage. एक दुनिया से बाहर का एक दुनिया के लिए हम लोग जा रहा है. कितना प्रेशर था टीचर लोग से, वो प्रेशर छोड़ करके हमारा दुनिया में, हमारा फ्रीडम का एक दुनिया में जा रहा है करके सोचा है. लेकिन आप अंडरलाइन करके लिख लीजिए, और आपके सामने हमारे एक अलुमिना भी है, तो मैडम आई थिंक शी विल एक्सप्लेन हाउ द स्कूल लाइफ इज मोर इम्पोर्टेंट इन एवरी स्टूडेंट्स लाइफ. So really you will miss it. And second thing is that there is an anxiety is also in your mind regarding your examinations. I think that only 4 or 5 days are remaining for the annual examination. On that time I will not take much time, and I will let's speak 4 words. You should know, we know that we are start our education from studying the English alphabets of A, B, C, D, then it goes to up to Z. So you should learn, you should think about the A, B, C, D. That is the 4 words. The first word A stands for, you should speak the affirmative words. Affirmative words you should speak from today onwards. You should speak affirmative words. What is the affirmative words? Affirmative words is that you should say positively. If I am asking anybody regarding how much mark you have scored in the physics in the pre-board exam, some will say that out of 25 I will score 20, or 18 or 7 or 5 or 0 also scored, I know it. But what is the affirmative word is that you should write down in a paper that I will score. If anyone is got 5 or 6 or 7, then definitely he will not write I will score 50 out of 50. It is not possible. Within score within 10 days. But you can write down this affirmative word that I will pass the physics exam. You should write down in your paper and write down in paper and stick in anywhere with your C, and read it every day and speak it every day. I will win the subject of physics. I shall pass the exam of physics, or I shall pass the exam of the maths, or I shall pass the examination. Which are the exams you have more tough? And if you are very good in, suppose you are very good in maths, and you said that I will score 100 out of 100 in maths. Not only you should say, you should write down and stick in a place where you are seeing firstly. This is the affirmative sentence. So speak in a positive way about your subjects, about your examination and everything. That is the A stands for affirmative. Then B stands for, you need believe in yourselves and believe in God. Believe in yourselves and believe in God. That is the second thing B stands for. How many of you have believe in yourself? How many of you have believe in yourself? I think that everyone have believe in yourselves. Suppose somebody didn't yet now somebody is not in this area. So we know that if you do the 50%, the remaining 50% will fulfill by. If you do the 50%, the remaining 50% will fulfill by God. So what we are doing is let the God will complete the 50%, then remaining I will complete. If you are sitting on that way, you will never succeed in your life. So it's necessary I should fulfill my 50%. The remaining is my God will work for me to fulfill remaining the 50%. So that's why B stands for believe in God and believe in yourselves. Then C stands for control your environment. I previously said that there are 5 or 6 days remaining for your examinations.
So kindly put off your mobiles. Kindly avoid all the friendships for the remaining 5 or 6 days. सब बंद करके, कैमरा बंद करके, मोबाइल बंद करके बैठिए। अभी देख लीजिए, अभी सब पहन के, मैं ये नहीं कर रहा, आप लोग सब पहन करके आया है कपड़ा सब, कल कितना रुपए इसके लिए आप लोग का पेरेंट्स खर्चा किया करके देखो। तो एक इज्जत होना चाहिए, ये वाला कपड़ा पहन करके मैं दूसरे एक जगह में बैठना है। अभी देख 2016 में, हाँ 2016 में दिस फीलिंग में बैठा है शिवांगी। Now how she is sitting here in front of you, Assistant Superintendent of Land and Revenue. How many years she take only? I think that only 6 or 7 years. After 6 or 7 years, she reached in a good post. That means compared to an IAS officer, if she is starting his profession in this way, at the end, that means when she is retired, definitely she will be that one of the top position in the Chhattisgarh. And it's a big fame for our MGM fraternity. Why? Because this is our student. That is the gratitude you can give to your teachers. So control your environment, avoid all types of relationships, avoid all types of distractions in the coming days, and concentrate and focus on studies. That is, C stands for control the environment, and D stands for determination. घर में जो है हमारे भाभी लोग है, दीदी लोग है, घर के सामने वाला है, सब बता देंगे। आपको मालूम है वो लड़का 12 घंटा 13 घंटा पढ़ाई किया, उसने भी मैथ्स में इतना स्कोर किया, आपने कितना स्कोर करेगा? आपका कुछ नहीं करेगा। मालूम है ना, दुनिया पूरा आजकल नेगेटिव भलाना वाला है। सो D stands for determination, means you need a super positive thinking. You should never compare anybody with yourselves. What happened is that in your life we are comparing others. अरे उसको उतना तक कितना घंटा पढ़ाई किया, उसको उतना मिला, फिर मेरे को क्या मिलेगा? तो उससे अच्छा है मोबाइल में खेलो, व्हाट्सएप में खेलो, स्टेटस डालो, नहीं है तो फिर क्या है, इंस्टाग्राम में पोस्ट डालो। आज मैं देख रहा है पूरा क्या मोबाइल वगैरह सुरेंद्र प्रसाद साहब ले लिए, तो इतना दुख में बैठा है। जब वो मेरा हाथ में मिलेगा तभी होना चाहिए मेरा IC वाला क्लिक, PC वाला क्लिक, वो पोस्ट करना है। पोस्ट करके 2 जन हाँ 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 बहुत समय ये सब डाल दिया, बहुत जिंदगी भर दिया है, मन भर दिया, वो खुश हो गया। वो सब है ना, वो सब थोड़ी देर के लिए है, थोड़ी देर के लिए है। That will go. You should think that you need a super positive in your life. You should need a determination in your life. You have to say that I will never give up. I will never give up. ये 5 दिन है, 5 दिन आप कष्ट करें तो 100% रिजल्ट you can bring in your life. ये 5 दिन आप लोग आपका दुनिया में अभी जैसे बैठा है ऐसी मस्ती उठ के बैठो बाबा, फिर लास्ट में रोने के लिए ही लास्ट में आएगा। इसलिए ये 5 दिन 24x5 स्पेंड कर लीजिए, कष्ट कर लीजिए। डेफिनेटली सिर ऐसे रख करके खड़ा होने के लिए नहीं हो सकता, नहीं है तो आगे है ना प्रदीप सर के सामने, नहीं है तो मोना मैडम के सामने, नहीं है तो प्रिंसिपल फादर के सामने आके क्या हो गया 12वीं में बाकी अब फील करो। जब सिर झुकेगा तो सिर उठ के विथ मोर करेजस आपको स्टैंड होने के लिए, खड़ा होने के लिए क्या करना है? ये 5 दिन, सिर्फ 5 दिन कष्ट कर लीजिए। 5 दिन मेरा पढ़ाई के लिए आप स्पेंड कर लीजिए। सो दिस 4th stands for determination. You should say that never give up attitude. And the last thing then, first is you should say the affirmative words. B stands for believe in yourselves and believe in God. Then C stands for control your environment, control your distractions. Then D stands for determination. So ये चारों मिलना है। अभी मैं किसी को भी पूछे तो सब बता देंगे फादर क्या करेंगे, अभी तो फोकस नहीं मिल रहा पढ़ाई के लिए ना, सही है ना, कोई है ना दिक्कत, पढ़ाई में ध्यान देने के लिए नहीं हो रहा है। सब है फादर, आप बताएं ना, अफर्मेटिव वर्ड्स में बता देंगे, लिखेंगे,
मेरे में मेरे तरफ में मैं बिलीव कर देंगे, मैं भगवान के ऊपर में मैं बिलीव कर देंगे, ठीक है ना, कंट्रोल द एनवायरनमेंट वो भी मैं कर देंगे, डिटर्मिनेशन भी है, लेकिन क्या है, फोकस नहीं हो रहा, माइंड को फोकस नहीं हो रहा. सो द लास्ट थिंग इज फोकस योर माइंड. यू शुड go through in a four ways. One is to focus your mind. You should identify that, you should accept that everyone have a problem of daydreaming. बुक खोल के बैठा है, तब मन कहाँ जाता है, मन कहाँ जाता है? क्लास 11th वाला बच्चा रिस्पॉन्स कर रहा है. बुक खोल के रख दीजिए, तब मन कहाँ जा रहा है? हाँ, गुरुद्वारा में जा रहा है. So daydreaming, this is the one problem we are facing, that we are not able to focusing in the studies. So avoiding the distractions, what you should do, the first thing is that you should write down your distractions. That means you should write down your distractions. When you start to write down the distractions, that means क्या distractions मेरे को होता है, what are the distractions, then you are understanding that distractions and how it will affect in your thinking, or that way you can identify it. So write down the distractions. That is the first method. Second method is be brave enough to remove the distractions. Be brave enough to remove the distractions. We are using mobile phones lot of. So इसमें क्या है, आजकल हम लोग का ट्रिगर्स है. ट्रिगर क्या है, कई जगह बैठे हैं तो भी हमारा मन में आ रहा है मेरा मोबाइल बज रहा है. दैट इज द ट्रिगर, है ना. कई जगह बैठे हैं तो किसी के भी मोबाइल में रिंग होने था, तब हम लोग को लग रहा है मेरा मोबाइल बेल बज रहा है. सो दैट इज द ट्रिगर. अवॉइडिंग द ट्रिगर, अवॉइडिंग द ट्रिगर. बेल बजने दो. That is the brave. We need the brave enough to remove the distractions. Then third is to need the focus. Do not study for a long time. Do not study for a long time. मत सोचो आज से मैं 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा एक ही साथ बैठ करके पढ़ाई कर सकता है. कभी भी नहीं हो सकता है, कभी भी नहीं हो सकता है. The time period will be take at 25 minutes. 25 minutes one slot, then 2 or 3 minutes take time for refreshing, then again 25 minutes, then take break. So you should divide the time in that slot, then only you can achieve more. Then the fourth is practice a meditation before study. Practice a meditation before study. When I am you know that I am a priest, so it's don't think on that way, another way. When I am a priest and we are giving the sermons in the church, and we are encouraging the students, we are telling the students, before you study, hello, 2 minutes. Before you study, normally I am told to the students that before you study, you should pray this prayer. It's for those who are need. I didn't say that it's compulsory. You should say that one way. We are encouraging our students in this way. God help me to study well and concentrate enough. God help me to study well and concentrate well. तो ये 5 बार बता के फिर आप लोग बुक पढ़ाई करने के लिए शुरू कर देंगे. उसमें 2-3 चीज है. एक है, we can keep a time for settle down. We can be, our mind will be in a calm mode. कई जगह घूम के नहीं है तो पापा बोल रहा, मम्मी बोल रहा है तुमको पढ़ाई करने के लिए कुछ नहीं है, 5 दिन के बाद एग्जाम है, ये सब सुन करके पढ़ाई के लिए एक मन होना चाहिए. नहीं, ये बिना मन से बैठ करके सबको प्रीति करने के लिए बुक खोले तो फोकस करने के लिए नहीं हो पाएगा. तो इसलिए खुद मन से आने के लिए मन को पहले शांति करना बहुत जरूरी है. तो किताब के सामने आके 2 मिनट, प्रेयर भी नहीं करने दो, 2 मिनट आके बुक के सामने शांति से बैठिए, इनफ. तब फिर आप लोग शुरू कर लिए पढ़ाई करने के लिए. सो दिस 4 ways you can gain the focus on your studies. So I think that this is too much and in this age ये जो उपदेश देना वाला बहुत खतरनाक चीज़ है, क्योंकि क्लास 10 से 12 तक बच्चा लोग को मन में है
हम लोग को सब मालूम है, आप लोग हमारा उपदेश करने के लिए, टीचिंग करने के लिए मत आइए. That is because you are entering the age of adolescence. In the psychology, when we are entering the age of adolescence, we are feeling that we know everything. That is our psychological problem. We know everything and you don't come to teach ourselves. ठीक है ना? है मोना मैडम जो बायोलॉजी बोल रहा है उससे ज़्यादा बायोलॉजी मेरे को मालूम है, तो इसलिए मोना मैडम का बायोलॉजी मेरे को नहीं चाहिए. उससे ज़्यादा 3 गुण बायोलॉजी मेरे को मालूम है ना. शाजी सर का मैथ्स के 3 गुण मैथ्स मेरे को मालूम है, मेरे को पढ़ाने के लिए मत आ जाइए. ये हमारा एक मन में एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है. सो दैट्स व्हाई आई एम ट्राइंग टू वाइंड अप माय वर्ड्स. Once again, I take this opportunity as the head of the, that means the local manager of this institution. First of all, I take the opportunity to congratulate and welcome to Shivangi madam, and also best wishes for your examination. May God bless you. We are expecting in the last 2-3 days before also I have discussed with father, principal father also, and we are expecting a 100% result. We are expecting a 100% result this academic year. So I think that by the God's grace and your hard working, it will be fulfilled, and we can do one thing only: pray for you. That only I can do for you. That I giving promise you to that. Definitely I will pray for my students. That means my students means the school belongs to 1,327 students are there. That all are our children. So definitely we will pray for our part. We will do. So your part is do the hard work and do the exam in a proper way. May the Almighty God bless you. Thank you everyone.